Devpur area of Malda district, West Bengal. This has sparked tensions between India's border security force and the border guard, Bangladesh. The BSF began installing the fence, prompting objections from the BGB. However, the BSF dismissed these concerns, stating that the fencing is being constructed within Indian territory. Notably, the fencing work along the India-Bangladesh border is progressing steadily. Viewers, when it comes to sharing the border with Bangladesh, India shares 4,096 kilometers border with Bangladesh. Notably, West Bengal alone shares a 2,216 kilometer long border with Bangladesh. A major portion of this remains unfenced. This unfenced border area witnesses issues like smuggling and infiltration. These problems have intensified now amidst political turmoil in Bangladesh and concerns over the fall of Sheikh Hasina's government. Consequently, India has accelerated efforts to secure the border because the vast and challenging terrain of the India-Bangladesh border fencing work is very difficult. And notably, the border spans across 5 Indian states. Tensions also have risen in recent days. In response, the BSF and BGB officials held a flag meeting to address the situation. Renik Datta is joining us for more on this story. Renik, take us through what the details are regarding this fresh row between India and Bangladesh on the border. हाँ, एकदम देखिए, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर लाइन गुजरा है उसमें बहुत सारे जगह ऐसा है जिस जगह में अभी तक फेंसिंग नहीं है और इसी जगह को इस्तेमाल करते हुए इलीगल तरीके से जो ट्रेसपासिंग का घटना हो या इन्फिल्ट्रेशन का घटना हो, इस तरीके का घटना बहुत सारे बार सामने आया है। और बीएसएफ की तरफ से इसी को देखते हुए पश्चिम बंगाल का 20 जगह को ब्लैक स्पॉट डिक्लेयर किया गया है और इस 20 जगह में जो फेंसिंग लगाने का काम वो बीएसएफ की तरफ से चालू किया गया था। और ये बीएसएफ की तरफ से जब ये काम चालू किया गया था, ठीक उसी टाइम पर बीजेपी की तरफ से ये काम को रोक दिया गया है। और बीएसएफ का ये काम पर रुकावट के कारण में बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि शेख हसीना के टाइम पर बांग्लादेश में जो बांग्लादेश के साथ जो बातचीत हुआ था, जो मैप तैयार किया गया था कि जिस जगह में मार्क किया गया था, जिस जगह में फेंसिंग तैयार किया जाएगा उस जगह में अभी नहीं हो सकता है। अभी नया इंटरिम गवर्नमेंट है और इसी वजह से नया तरीके से बातचीत करना पड़ेगा और इसी बात को लेकर बीजेपी की तरफ से बीएसएफ का जो काम वो काम को रोक दिया गया है। सिर्फ मालदा नहीं, मालदा के साथ मालदा, कोचबिहार, उत्तर दिनाजपुर, हर जगह पर एक ही बात दिखाई दे रहा है, एक ही तस्वीर सामने आ रहा है। ठीक इसी सिचुएशन में बीजेपी की तरफ से, बीजेपी जो जवान है उनकी तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर बीएसएफ की तरफ से ये फेंसिंग लगाया जाएगा तो वो लोग चाहे तो गोली भी चला सकता है, ऐसा धमकी भी बीजेपी की तरफ से दिया गया है। ठीक इसी सिचुएशन को शॉर्ट आउट करने के लिए अभी बीएसएफ और बीजेपी दोनों के तरफ से ही फ्लैगशिप जो मीटिंग, वो फ्लैगशिप मीटिंग किया जा रहा है। पेट्रोपोल बॉर्डर में फ्लैगशिप मीटिंग हुआ था, उसके बाद मालदा बॉर्डर में, कोचबिहार बॉर्डर में और उसके साथ साथ ही जो उत्तर दिनाजपुर का जो बॉर्डर है उस जगह पर भी फ्लैगशिप मीटिंग अभी किया जा रहा है। Renik, Major General Mohammad Ali Shah, defense expert, is also joining us on the broadcast. What do you make of this fresh row on the border? Uday, the BSF has a big challenge. They do a very, very good job and a very thankless job. Unfortunately, the border fencing is an issue because there are several issues to border fencing. I'll give you a small example to correlate with this. Say the Indo-Pak border, which is fenced, line of control. There is line of actual control India-China, the Tibetan border. That line of actual control with a perception, 3,488 kilometer stretch. Now the Myanmar border, again, the Bangladesh border, again. There have been several cases of cattle smuggling incidents from India-Bangladesh border, in fact. Now, there will be resistance to some extent for some people the fencing would be hindrance. So, but you can't have a free way to walk in and walk out. You can't do that. हम अपने घर में नहीं करते. Like here in our neighborhood, we cannot encroach on the land of our neighbor, in fact. Similarly, so I think the fencing issue, they would be an issue, yes, but the trouble is how we overcome that. And let me tell you, the border security force, I had the opportunity to go to Bangladesh by road in the year 2020 when our relationships were very, very good with Bangladesh. I went there for a TEDx talk. And that time I saw on the Indian side, the BSF and the Rangers across on the Bangladesh side, both were doing a very fine job in their own place and they were all set and all ready. But despite that, despite heavy security, despite it being heavily guarded, there were cases of infiltration that would take place.
So the very fact is, how do we tackle the challenges over there? The Indo-China border, people say it's not. It should be fenced. It's not fenced because even if it's fenced, one has to man the border. Without manning the fence, there's no point of fencing when you cannot man it. So the challenges would remain, but the biggest, the acid test is overcoming your challenges there or there.